Hello and welcome everyone. Is my voice clear and audible? Audible. Okay, thank you so much. Okay, so we'll begin with a short meditation. Sit back comfortably. Withdraw your attention from the outside world and bring it to yourself. Imagine yourself standing in front of a treasure house. As you open the door, you're greeted by a warm golden light that fills your entire being. Repeat to yourself, I am worthy of abundance and prosperity. Allow the light to nourish and uplift. Inside this treasure house, you'll find an infinite wealth of possibilities, talents, and gifts. Repeat, I trust in my inner wisdom and intuition. Feel your inner guidance growing stronger, leading you to make wise decisions and choices. As you explore this treasure house, you will discover hidden rooms filled with love, joy, and peace. Repeat, I am filled with love, joy, and peace. Feel this positive emotion spreading throughout your being. Remember, this treasure house is within you, and you have the key to access it whenever you need it. Repeat, I trust in my inner power and potential. Feel your confidence and self belief growing stronger. Thank you so much, everyone. So, we'll begin with today's reading. I'll just share the screen with you. Okay, so today we're going to start with chapter 10, Your Right to Be Rich. It is your right to be rich. You are here to lead the abundant life and be happy, radiant, and free. You should therefore have all the money you need to lead a full, happy, and prosperous life. You are here to grow, expand, and unfold spiritually, mentally, and materially. You have the inalienable right to fully develop and express yourself along all lines. You should surround yourself with beauty and luxury.
तो यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि हमारा राइट है टू बी रिच, एंड बाय रिच व्हाट डज ही मीन? खाली मटेरियल वेल्थ नहीं, वी आर सपोज टू ग्रो मेंटली, स्पिरिचुअली, the feeling of being abundant, happiness, that all accounts to us being rich. It's not just about the money, it's about everything together. Why be satisfied with just enough to go around when you can enjoy the riches of your subconscious mind? In this chapter, you can learn to make friends with money, and you should always have a surplus. Your desire to be rich is a desire for a fuller, happier, more wonderful life. तो जो हमारी डिजायर है टू बी रिच, इट इज नॉट जस्ट फॉर वेल्थ, इट इज टू बी हैप्पी, कंप्लीट, हैविंग अ वंडरफुल लाइफ. इट इज अ कॉस्मिक अर्ज. इट इज नॉट ओनली गुड but very good. Money is a symbol. Money is a symbol of exchange. It means to you not only freedom from want, but beauty, luxury, abundance, and refinement. It is merely a symbol of the economic health of the nation. When your blood is circulating freely in your body, you are healthy. When money is circulating freely in your life, you are economically healthy. तो ये जो हम मनी को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं ना, अगर इट्स जस्ट अ सिंबल ऑफ एक्सचेंज, जैसे इट इट शोज द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ नेशन. बट जब हमारे अंदर, व्हेन आवर ब्लड इज सर्कुलेटिंग फ्रीली, व्हेन वी आर हेल्दी, दैट इज व्हाट इज हेल्दी फॉर अस. सिर्फ मनी का होना हमारे लाइफ में, उससे हम क्या डिफाइन किया है ऑथर ने, कि वी आर इकोनॉमिकली हेल्दी. When people begin to hoard money, to put it away in tin boxes and become charged with fear, there is economic illness. Money has taken many forms as a medium of exchange down through the centuries, such as salt, beads, and trinkets of various kinds. In early times, a man's health was determined by the number of sheep and oxen he had. Now we use currency and other negotiable instruments, as it is much more convenient to write a check than carry some sheep around with you to pay bills. तो पहले जमाने में कैसे होता था? एक्सचेंज ऑफ चीजें होती थी, दे बहुत सारी चीजें होती थी जो एक्सचेंज करते थे. दैट वाज हाउ मनी वाज यूज्ड, इट वाज जस्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बट अभी अभी क्या इजियर वे है, टू राइट अ चेक, और इंस्टेड ऑफ transferring things from here to there, अभी it's become easier to exchange currency. So that is all how important it is, but आज की डेट में हमने उसको बहुत ज्यादा importance दिया हुआ. How to walk the royal road to riches. Knowledge of the powers of your subconscious mind is the means to the royal road to riches of all kinds, spiritual, mental, or financial. तो हाउ कैन वी बी रिच? जब हमें अपने आप की अवेयरनेस होगी, अपने सबकॉन्शियस माइंड की, विल बी रिच नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट स्पिरिचुअली एंड मेंटली एज वेल. The student of the laws of mind believes and knows definitely that regardless of economic situations, stock market fluctuation, depression, strikes, war, other conditions or circumstances, he will always be amply supplied, regardless of what form money takes. तो जिनको जिसको इस बात की नॉलेज है कि हाउ कैन वी बी रिच, इट इज व्हेन वी आर स्पिरिचुअली नॉलेजेबल, व्हेन वी आर मेंटली स्टेबल एंड फाइनेंशियली सिक्योर एज वेल. तो जब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिचनेस. तो जिसको इस बारे में पता है, इस नॉलेज की अवेयरनेस है,
उसके लिए कोई भी सिचुएशन बाहर हो, चाहे कोई क्राइसिस हो रही हो, वॉर चल रही हो, बट स्टिल यू नो he will be content from inside. That person will be content because he knows the laws of the mind, the laws of nature. The reason for this is that he has conveyed the idea of wealth to his subconscious mind, and it keeps him supplied wherever he may be. He has convinced himself in his mind that money is forever flowing freely in his life and that there is always a wonderful surplus. Should there be a financial collapse of government tomorrow and all the man's present holdings become valueless, as the German marks did after the First World War, he would still attract wealth and be cared for, regardless of the form the new currency took. तो अगर हम अपने अंदर ही इतना कंटेंट है, इतने फुलफिल्ड हैं, अगर हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर दिया है कि आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट फुलफिलमेंट नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, तो दैट पर्सन विल ऑलवेज बी रिच। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि वर्ल्ड वॉर भी हो गया, उसके बाद भी द दे नो कि दे विल बी केयर्ड फॉर बिकॉज they have trust in their own subconscious. They know the laws of the nature. Why you do not have more money? As you read this chapter, you are probably saying, I am worthy of a higher salary than I am receiving. I believe most people are inadequately compensated. One of the causes many people do not have more money is that they are silently, openly condemning it. They refer to money as filthy lucre, or the love of money is the root of all evil. तो जब हम ये कहते हैं ना कि बिकॉज ऑफ हैविंग सो मच मनी, व्हेन वी स्टार्ट कंडेमिंग मनी, जब हमें लगता है कि ज्यादा पैसा होना अच्छा नहीं है, इट ब्रिंग्स इविल इन यू, जब हम ऐसे अगेंस्ट हो जाते हैं, उससे भी हमारे लाइफ में वेल्थ आनी कम हो जाती है। तो वी डोंट हैव टू कंडेम मनी। हमें ऐसे नहीं होना है कि वी डोंट लाइक मनी और वी डोंट वांट मोर मनी। दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट अप्रोच। Another reason they do not prosper is that they have a sneaky subconscious feeling there is some virtue in poverty. तो कई लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं, पैसे होने ही नहीं चाहिए, हम ऐसे ही ठीक है, कि कुछ there is some good feeling they're getting in just being the way they are. This subconscious pattern may be due to early childhood training, superstition, or it could be based on a false interpretation of scriptures. Money and a balanced life. One time a man said to me, I am broke. I do not like money. It is the root of all evil. These statements represent a confused neurotic mind. तो जब हम ऐसे कहते हैं ना कि मुझे मनी नहीं चाहिए, इट इज, इसके वजह से ही जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मनी, इट्स ऑल बिकॉज पीपल आर आफ्टर मनी। तो जब हम ये स्टेटमेंट्स बोलते हैं, इट शोज कि हमारा माइंड कंफ्यूज्ड है, देयर समथिंग रॉन्ग। Love of money to the exclusion of everything else will cause you to become lopsided and unbalanced. And also, अगर हमें सिर्फ पैसों से प्यार है, if we just want more and more money, उससे भी हमारी life unbalanced होगी. You are here to use your power or authority wisely. Some men crave power, others crave money. If you set your heart on money exclusively and say, money is all I want, I'm going to give all my attention to amassing money, nothing else matters. You can get money and attain a fortune, but you have forgotten that you are here to lead a balanced life. You must also satisfy the hunger for peace of mind, harmony,
love, joy, and perfect health. तो यहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली समझाया है कि सिर्फ पैसे के पीछे भी नहीं भागना है कि जब हम ये अपने मेंटली हम जब चाहते हैं कि आई वांट ऑल द मनी और आपका सारा अटेंशन खाली इट्स ओनली इन अर्निंग मनी, तो उससे यू विल अट्रैक्ट मनी। हो सकता है आप बहुत यू बिकम वेरी वेल्दी, यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी, बट उससे क्या आपकी बैलेंस लाइफ हो रही है? ये बात पे हमें ध्यान देना है कि इट इज नॉट जस्ट द सेटिस्फैक्शन ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, इट इज ऑल्सो हमारा अपना पीस ऑफ माइंड, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बीइंग रिच। जब हम सब एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, पीस ऑफ माइंड, जॉय, फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, दैट इज व्हेन वी आर इन गुड हेल्थ, एंड दैट इज व्हाट इज एक्चुअली कॉल्ड बीइंग रिच। By making money your sole aim, you simply made a wrong choice. You thought that was all you wanted, but you found after all your efforts that it was not only the money you needed, you also desired true expression of your hidden talents, true place in life, beauty, and the joy of contributing to the welfare and success of others. By learning the laws of your subconscious mind, you could have $1 million or many millions if you wanted them, and still have peace of mind, harmony, perfect health, and perfect expression. तो हमें हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बैलेंस्ड लाइफ लीड करने के लिए दैट्स दोज आर द थॉट्स दैट वी हैव टू फीड द आवर सबकॉन्शियस माइंड। इट इज नॉट कि हमें वी जस्ट वांट अ लॉट ऑफ मनी, उसके साथ वी आल्सो नीड गुड हेल्थ, we need fulfillment, contentment, mentally and spiritual evolvement। इन सब चीजों से हमारी लाइफ बैलेंस्ड होती है, इन सब चीजों से वी आर कंटेंटेड, वी आर इन हार्मनी, वी हैव गुड हेल्थ। इट इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी। तो हमें अपने लाइफ में सिर्फ मनी को ही इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, इट इज बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, दैट इज व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, poverty is a mental disease. There is no virtue in poverty. It is a disease like any other mental disease. If you were physically ill, you would think there was something wrong with you. You would seek help and do something about the condition at once. Likewise, if you do not have money constantly circulating in your life, there is something radically wrong with you. So even if you don't have enough for your ends to meet, अगर आपके पास नहीं है enough money circulating, तो उस पे भी आपको work करना है। जैसे author ने कहा, that also means there is something wrong, because the circulation of money in our life is also equally important. तो अगर ऐसा है तो we need to start working on that as well. The urge of the life principle in you is toward growth, expansion, and the life more abundant. You are not here to live in a hovel, dress in rags, and go hungry. You should be happy, prosperous, and successful. तो इतना मिनिमम अमाउंट तो हमें चाहिए फॉर अ गुड लिविंग, so that we don't go hungry, we are dressed up well and we are happy. So that should be there for our life to be, for us to be happy and successful. एक basic amount of money circulation तो चाहिए। Okay. Why you must never criticize money. Cleanse your mind of all weird and superstitious beliefs about money. Do not ever regard money as evil or filthy. If you do, you cause it to take wings and fly away from you.
तो अगर हम ये थॉट क्रिएट करें ना कि मुझे इतने पैसे चाहिए ही नहीं, हमें मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ज्यादा, पैसे होने से इविलनेस आती है। इफ यू हैव ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स अबाउट मनी, तो वील बी हम अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे वो वेल्थ। तो हमने ये सब नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन नहीं करना। रिमेंबर दैट यू लूज व्हाट यू कंटेम, you cannot attract what you criticize. Getting the right attitude towards money. Here is a simple technique you may use to multiply money in your experience. Use the following statements several times a day. I like money. I love it. I use it wisely, constructively, and judiciously. Money is constantly circulating in my life. I release it with joy and it returns to me multiplied in a wonderful way. It is good and very good. Money flows to me in avalanches of abundance. I use it for good only, and I am grateful for my good and for the riches of my mind. तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत सिंपल टेक्निक बताई है ऑथर ने। दीज आर द एफर्मेशंस दैट वी कैन यूज सेवरल टाइम्स अ डे सो दैट वी हैव इनफ फ्लो ऑफ मनी इन आवर लाइफ टू कीप अस हैप्पी, कंटेंटेड, हैव इनफ टू फॉर एंड्स टू मीट। तो यहाँ पे ऑथर ने ये कहा कि हमें ये सब एफर्मेशंस लेनी चाहिए कि आई लाइक मनी एंड मनी इज सर्कुलेटिंग फ्रीली इन माई लाइफ। ओके, how the scientific thinker looks at money. Suppose, for example, you found gold, silver, lead, copper, or iron in the ground. Would you pronounce these things evil? All evil comes from man's darkened understanding, from his ignorance, from his false interpretation of life, and from his misuse of his subconscious mind. तो मतलब अगर हमने कुछ देखा, हमें गोल्ड सिल्वर कुछ मिला, तो अब क्या हम उसको इविल बोलेंगे? तो इविल ऐसा कुछ होता नहीं है, इट इज ऑल द इंटरप्रिटेशन, इट्स ऑल हाउ वी लुक एट थिंग्स। और जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज नहीं करते। Uranium, lead, or some other metal could have been used as a medium of exchange. We use paper bills, checks, nickel, and silver. Surely these are not evil. Physicists and chemists know today that the only difference between one metal and another is the number and rate of motion of electrons revolving around a central nucleus. They can now change one metal into another through a bombardment of the atoms in the powerful cyclotron. Gold, under certain conditions, becomes mercury. I believe that our modern scientists in the near future will be able to make gold, silver, and other metals synthetically in the chemical laboratory. The cost may be prohibitive now, but it can be done. I cannot imagine any intelligent person seeing anything evil in electrons, neutrons, protons, and isotopes. तो जैसे हम इन सब चीजों में कुछ नेगेटिव देखते नहीं हैं, वैसे ही मनी में भी there is nothing negative. The piece of paper in your pocket is composed of atoms and molecules with their electrons and protons arranged differently. Their number and rate of motion are different. That is the only way the paper differs from the silver in your pocket. How to attract the money you need. Many years ago, I met a young boy in Australia who wanted to become a physician and surgeon, but he had no money. I explained to him how a seed deposited in the soil attracts to itself everything necessary for its unfolding
and that all he had to do was to take a lesson from the seed and deposit the required idea in his subconscious mind. For expenses, this young, brilliant boy used to clean out doctors' offices, wash windows, and do odd repair jobs. He told me that every night as he went to sleep, he used to picture in his mind's eye a medical diploma on a wall with his name on it in big, bold letters. तो यहाँ पे वो ऑथर एक यंग बॉय की बात कर रहे हैं जो he wanted to become a physician but he didn't have any money. तो उन्होंने उसको समझाया कि you know how we deposit a seed in the soil and it starts growing into a beautiful plant. So that is the same way in which हम जो भी अपने conscious mind को हम सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हैं. दैट इज लाइक प्लांटिंग अ ट्री. दैट इज लाइक अ सीड बीइंग प्लांटेड इन द सबकॉन्शियस माइंड. सो जो भी हम थॉट्स क्रिएट करते हैं इन आवर ओन कॉन्शियस माइंड, दैट इज व्हाट गेट्स फीडेड टू द सबकॉन्शियस एंड फिर सबकॉन्शियस उसको मैनिफेस्ट करता है. तो ऑथर ने बताया कि ही वॉज वेरी यंग एंड ब्रिलियंट बट वो क्या करता था, यूज टू क्लीन ऑफिसेज, वॉश विंडोज एंड डू ऑल odd jobs. He told me that every night as he went to sleep, he used to picture in his mind's eye a medical diploma on a wall with his name on it in big bold letters. He used to clean and shine the framed diplomas in the medical building where he worked. It was not hard for him to engrave the image of a diploma in his mind and develop it there. Definite results followed as he persisted with his mental picture every night for about 4 months. तो यही जो इसके माइंड में जो पिक्चर बनी थी कि ही विजुअलाइज्ड कि हिज मेडिकल डिप्लोमा ऑन द वॉल विद बिग बोल्ड लेटर्स. तो उसने ये विजुअलाइज किया, उसने मैनिफेस्ट किया कि ये हो रहा है. आई एम गेटिंग माई डिग्री, माई डिप्लोमा. तो हुआ क्या, आफ्टर अ फ्यू आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 4 months, जब उसने ये कॉन्स्टेंटली ये देखा, ये पिक्चर मेंटली विजुअलाइज किया, सो दैट्स व्हेन इट्स मैनिफेस्टेड. डेफिनेट रिजल्ट फॉलोड मतलब इट मैनिफेस्टेड जो भी उसने विजुअलाइज किया था, पिक्चर किया था. The sequel of this story was very interesting. One of the doctors took a great liking to this young boy, and after training him in the art of sterilizing instruments, giving hypodermic injections, and other miscellaneous first aid work, he employed him as a technical assistant in his office. The doctor later sent him to medical school at his own expense. Today, this young man is a prominent medical doctor in Montreal, Canada. He discovered the law of attraction by using his subconscious mind the right way. He operated an age old law which says, having seen the end, you have willed the means to the realization of the end. The end in this case was to become a medical doctor. तो उसने जब जो उसने अपने सबकॉन्शियस को फीड किया विजुअलाइजेशन टेक्निक से, जो वो रोज विजुअलाइज करता था दैट मेडिकल डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफ हिम, उससे क्या हुआ, तो where he used to work, वहाँ पे उसको एम्प्लॉय कर लिया एज अ टेक्निकल असिस्टेंट एंड द डॉक्टर पेड फॉर हिज मेडिकल स्कूल. So that's what he's trying to show. He got whatever he want just by using his subconscious mind the right way, because उसने अपने subconscious mind को यही feed किया था. This young man was able to imagine, see, and feel the reality of being a doctor. He lived with that idea, sustained it, nourished it, and loved it until through his imagination it penetrated the layers of his subconscious mind and became a conviction.
thereby attracting to him everything necessary for the fulfillment of his dream. तो he believed, उसको fully faith था इस पे। जब भी वो इमेजिन करता था, विजुलाइज करता था, ही हैड फुल फेथ इन हिमसेल्फ, फुल कॉन्फिडेंस, फेथ कि ये होना ही होना है। दैट इज व्हेन द सबकॉन्शियस ऑल्सो बिलीव्स, whatever you feed it। अगर आपके कॉन्शियस माइंड में वो 100% कॉन्फिडेंस है और फेथ और बिलीफ है कि whatever I am manifesting is going to come true, so that's when the subconscious mind brings it। That's when it starts happening in our life। तो हमें वो 100% कन्विक्शन के साथ सबकॉन्शियस को फीड करना है। Why some men do not get a raise in pay? If you're working in a large organization and you're silently thinking of and resenting the fact you are underpaid, that you are not appreciated, and that you deserve more money and greater recognition, you are subconsciously severing your ties with that organization। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और अंदर ही अंदर आप सोचते हो कि आई एम नॉट गेटिंग पेड इनफ, आपके अंदर वो रिजेंटमेंट वाली फीलिंग है, तो इससे क्या हो रहा है, आप सबकॉन्शियस में वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो। You are setting a law in motion, and the superintendent or manager will say to you, "We have to let you go." Because obviously, that, those negative vibrations are passing to everyone in that organization. Actually, you dismissed yourself. The manager was simply the instrument through which your own negative mental state was confirmed. It was an example of the law of action and reaction. The action was your thought, and the reaction was the response of your subconscious mind. So we are the ones who are responsible for everything that happens in our life। जो भी thoughts हम create करते हैं वो ही manifest होता है, वो ही हमारे साथ होता है। So the action is actually our thought। जैसे author ने कहा, the action was your thought and the reaction was the response of your subconscious mind। तो जो थॉट क्रिएट किया सबकॉन्शियस ने, वो ही हम मैनिफेस्ट किया उसके लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस आवर थॉट्स, द वे वी आर थिंकिंग। हम हमारे थॉट्स को कैसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, जो भी नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर चल रहे हैं उसको चेक एंड चेंज करें। ओके, सो आई थिंक वील स्टॉप ओवर हियर टुडे and we'll continue the rest tomorrow। Okay, thank you so much for joining today's session। Would anyone like to share anything with us? Hello, Anika sister. Hello, Ritu sister। सेशन बहुत अच्छा था एंड सीरियसली मनी इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन हम ना थोड़ा सा तो एक रखते हैं अंदर लाइक कि पॉवर्टी इज गुड। वो कैसे, उन्होंने कितना अच्छा बोला कि वी हैव अ थॉट कि पॉवर्टी में वर्च्यू है। हम ऐसा सोचते हैं कि पैसा में माया है, लेकिन पैसा तो बहुत खूबसूरत चीज है, उससे हमें बहुत कुछ सुख मिलता है लाइफ में। तो वी हैव टू लव मनी, वी हैव टू लाइक मनी। कितना ऑथर ने कितना अच्छे से समझाया है, आपने कितने अच्छे से रीड किया। सो थैंक यू फॉर द सेशन। Thank मुझे you so much। हाँ जी, थैंक थैंक यू सो मच। हाँ, आपने ये बहुत एक अच्छा पॉइंट बताया कि ऑथर ने जो कहा ना, वी थिंक पॉवर्टी इज अ वर्च्यू। और जैसे आपने कहा कि बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि मनी माया है, बट दैट इज नॉट ट्रू। मनी इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो मनी के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका सिस्टर फॉर ज्वाइनिंग। मोनिका सिस्टर, हम आपका वेलकम भी करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको
अच्छा लगा आज का सेशन? यस मैम, अच्छा लगा। Okay. All right. So we'll end this session here today and we'll see you again tomorrow. थैंक यू। Thank you so थैंक much. Thank you.